मॉर्निंग। आज की जो राइड है वो खोपोली में होने वाली है एंड आई एम गोइंग विद अ न्यू राइडर. हिज नेम इज Darius. He has his sumo friends. He said yes, I'll be joining his sumo friends for a ride. देखते हैं राइड कैसे होने वाली. बट वी आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस खोपोली. खोपोली में क्या जगह का नाम है भूल गया मैं. देखते हैं. बट वी आर गोइंग टू मीट एट वाशी एट 6:30. अभी बजे है 5:45. So see you in वाशी. संडे राइड है, लॉन्ग राइड नहीं, संडे राइड छोटा. एंजॉय. और श्रेनिक भी आज मेरे साथ में आने वाला है, सो इट्स गुड. बाल बनाना है, जल्दी चलो, लेट हो रहा है ऑलरेडी. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स. ऑफ टू यूके रिजॉर्ट एट खोपोली. साउंड या लाउड है इसलिए आगे जाके गर्म करता हूँ. ओ स्टैंड निकालो. Sound is good. मजा आ रहा है. So today's ride is going to be at Khopoli. It's not too far. It is around 80 kilometers one way. So it's going to be like around 180 kilometers both way. मैं ज़्यादा पकड़ रहा हूँ बिकॉज थोड़ा ऊपर नीचे होता है. ये जगह है खोपोली में. क्विक राइड होने वाली है जहाँ के वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके वापस आ जाएंगे. छोटी राइड है. आई लव लॉन्ग राइड्स बट छोटी राइड शनि को करनी है. इसकी स्कूल चल रही है तो आई कैन नॉट टेक फॉर लॉन्ग राइड्स. सो हैप्पी विद शॉर्ट राइड्स, मॉर्निंग राइड्स, संडे राइड्स. और फिलहाल वी गोइंग टू मीट आवर न्यू फ्रेंड Darius. ही इनवाइटेड मी फॉर दिस राइड. सो न्यू ग्रुप, एक्साइटेड टू सी पीपल. एंड अरे यार ये रास्ता तो खोद के रखा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रोड. रोड का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ड्यूब था ये. बट आई एम ग्लैड they have started. बट ये 3-4 दिन पहले खोद के रखा था. कभी स्टार्ट करेंगे. एटलीस्ट दिख रहा है some signs of development. So होने दो. Anyway, so we are going to meet all the riders at 6:30. अभी हो चला है 6 o'clock and I am at Andheri. 6:30 को we are going to meet at Vashi toll naka. So चलो. Cyclists, so many cyclists early in the morning. So beautiful sight is. So 6:27 को पहुंच गया, which is not bad. वो 25 में पहुंच गया यहाँ पे. मतलब from Andheri to Vashi toll naka. और यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है. Darius, where are you? I don't see any riders. Is this the spot? Let's see. मैं इसको कॉल करके देख लेता हूँ. I'm sure he's riding, but 5 मिनट रुकता और. Are we waiting for someone? One person. Okay. Almost here. So these are the riders for today, and we're going to Ahura. No, sorry, not Ahura. UK resort, which I don't know, but we'll find out as we move on. Okay, so a lot of bikes in the group and different. So कोई GS है, कोई नाम तो मुझे भी पता नहीं एक्चुअली. कुछ श्रेणी को पता है. So once I know I will show them to you. But फिलहाल it's been a good ride with different folks, different bikes. फिलहाल it's an incentive to ride short ride too. So बने रहिए. नहीं कर रहे लोग. Oh, there were a lot of super bikes which were like fun. मजा है. लोग रुक रहे नहीं, लोग आगे जा रहे हैं for all the folks to come. Oh, सुबह सुबह बाइक का मेला.
मजा मजा मजा। ये रोड भी ऐसी है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्दी है तो थोड़ा ध्यान देके चलाना होगा। बट यस ऑफ कोर्स ध्यान तो है। हाँ हाँ है ना ये। Oh, the atmosphere is electrifying, so it's good. Oh, this is a good time, isn't it? मजा आएगी ना बाबू? This really felt like a not like a track, but very good. मजा आ गया। अपने भाई लोग आए कि नहीं? यही है ना? जबरदस्त जबरदस्त। मैं तो चुप बैठ गया था बिकॉज चुप रहने में ही समझदारी थी। शांत रह के चलाओ सिर्फ फुल। बट आई लव दिस बिल्डिंग, बट जो भी है इट इज फार एब्सोल्युटली डिवाइन। कौन से बाइक है? So we've reached here early morning in UK resort.
So fun actually looking all the superbikes together. Superbikes, cruiser bike. अच्छा लगता है. Dark special appearance. It feels wonderful. बहुत अच्छा लग रहा है इधर. मॉर्निंग राइड पे आए, मस्त में ऑमलेट एंड चाय गर्मा गर्म पी ली. गुड मॉर्निंग. और मैं थोड़ा वॉक कर रहा, थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे इसलिए. और शने क्या बोल रहा है कि ही वांट्स टू गो फर्दर इन लोनावला. नज़दीक ही है यहाँ से. राइट नाउ वी आर एट खोपली यूके रिजॉर्ट पर. और अच्छा है, अच्छा लग रहा है. न्यू प्लेस ना तो हमेशा अच्छा लगता है. हम लोग जाने वाले थे अहूरा में बट वी कैंसल्ड एंड नाउ वी आर हियर. ओहो सेटिंग कर रहा था. मस्त लग रहा है देखो. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. All these guys were there. And now we are off to Lonavla. Okay, see. ठीक है. देखो ऐसे जगह पे नाश्ता करो और मजा आएगा. आई लव दिस प्लेस. बहुत ही सुंदर लगता है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट place whenever you pass from Khopoli, little upper side of Khopoli, between Khopoli and Lonavla, खंडाला. ये जो रोड है ना बहुत 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 अच्छा लगता है. यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मुझे कभी होगा यार. ड्रोन का तो मेरा खोपड़ी टूट गया. मतलब उसका जो कैमरा है वो टूट गया. स्पोर्ट्स मोड में चला रहा था मैं और बेकाबू हो गया. लाइव वायर से टकराया लेकिन कुछ मतलब सिर्फ गिर गया नीचे. अगर नसीब खराब होता तो पूरा जल जाता. थैंक गॉड, रियली थैंक गॉड. ये रोड तो ऐसे ना जिसमें तो ऐसा स्लांट होके जा सकता है. ऐसा इतना अच्छा रोड्स बना के रखे हुए इंडिया में. मतलब महाराष्ट्र में कुछ कुछ रोड बहुत ज़्यादा अच्छे, उसमें से ये एक है. हेलो सर. चलो भेड़िया थी ना तो उनके सामने ज़्यादा आवाज़ नहीं करना था मुझे. लेकिन लुक एट द ब्यूटीफुल लोनावला खंडाला. बहुत अच्छा लग रहा है. ये वो है हाईवे ओनली फॉर 4 पहियों वाली गाड़ी के लिए ही है. वो 2 पहियों वाले के लिए वो दूसरा रास्ता जहाँ से मैं अभी आया. आई डोंट नो व्हाई द हेल बट वही है. चलो जाते वापस ट्रेन को मिलने. थोड़ा फास्ट चलाना है इसलिए रुका हूँ मैं. इधर मैं उधर देख रहा था. कैसा लग रहा है आज का राइड जो था शैनिक? बहुत मजा आया है कि नहीं? बहुत आज अच्छा लगा बिकॉज नॉट दैट वी डोंट पास फ्रॉम दिस रोड, मेनी टाइम टू पास फ्रॉम हियर. आज का रूट भी अलग था और आज हम लोगों ने सच में बहुत मस्त में बाइक चलाया, एंजॉय किया. एक्चुअली एक्सपीरियंस किया अपने आप को. मैं और शैनिक दोनों कंफर्टेबल थे. खाना ब्रेकफास्ट हो गया और अभी हम लोग आए लोनावला में. और यहाँ पे देखो सा हवा है, कितना अच्छा लग रहा है. बहुत ज़्यादा हवा है और हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है.